that came in today. We are here for a very, very important moment. For me, what PVR Cinemas has done is nothing short of a moment in the fight against climate change. Sanjeev, you mentioned that these are small steps. These aren't small steps. These are revolutionary steps because it's these steps that are going to make a larger impact. When that call came to me that PVR has taken this initiative and we should collaborate, I was amazed because my journey with the fight against climate change started on a very similar note as yours. You have anxiety as a parent about what kind of a world, what kind of a planet are you going to leave back for your children. I felt the same. I was like, okay, if I love my family, am I actually protecting them the way they are supposed to be protected? The four walls of my house isn't my home. This planet is my home. And the way we are going about destructing it, not a lot of it is going to be left. I really feel and I really hope that in the last few years, humanity has learned at least a bit of a lesson. When I go about whether we are shooting or at home or places I visit, we are just so careless about our practices. We are so careless about our consumption of natural resources. So a small thing like putting a water restrictor in your water source can save you so much water. और हमें क्या लगता है ना कि sustainability या एक sustainable lifestyle adopt करने से बहुत लाइफ में ना दिक्कतें होंगी, लाइफ इनकन्वीनियंट हो जाएगी, but that's not true. आपकी लाइफ बहुत कन्वीनियंट होगी. हमें उस तरह से जीना शुरू करना पड़ेगा जो 2 जनरेशन पहले जैसे हम जी रहे थे, जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ जी रही थी. एक सिंपल लाइफ. हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि छोटी से छोटी चीज, वो फूड वेस्टेज हो, वाटर वेस्टेज हो, एनर्जी वेस्टेज हो, या हम कैसे हर रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा. हमें समझना पड़ेगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग राइट नाउ. And as Sanjeev very well said, it is real. It is the largest looming threat that humanity has ever faced. We have to go back. We have to listen to what our scientists and what our researchers have been telling us for the past few years. We have reached a tipping point. Can we change it? No. Can we slow it down? Yes. When the pandemic hit us, when globally many places went into lockdown, we saw how our environment started healing itself. And we all spoke about it, we all enjoyed it. That's the planet we need to leave back for the future generations to come. Everybody living today and everybody living in the future has a right to clean air, good nutrition and a healthy planet. जैसे आप और मैं जिस माहौल में हम सब बड़े हुए, जिस माहौल में हम सब पैदा हुए, आगे की generations का भी उतना ही हक है. आप सोचिए, सर्दियों में स्कूल बंद कर देने पड़ते क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है. अभी कोची में लॉकडाउन हो रहा है, लिटरली लॉकडाउन वाले हालात हो गए हैं क्योंकि एक मैन मेड गार्बेज डंप में आग लग गई. अगर हम एक छोटी प्रैक्टिस सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अगर घर पे भी शुरू कर दे, आप उसका इफेक्ट नहीं समझ सकते कितना होगा इन दीज मैन मेड गार्बेज डंप्स. सो वी जस्ट नीड टू रियलाइज हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन. अगर हम ये मेंटालिटी रखेंगे ना, एक ऑस्ट्रिच मेंटालिटी की नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं होगा, बहुत साल पड़े हैं, बहुत जनरेशंस को, नहीं, हमें हो रहा है. हमारी लंग कैपेसिटीज कम हो गई है. ऐसी हालत होगी कि शहरों में हमें मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है विदाउट एनी पैंडेमिक लाइक सिचुएशन बिकॉज ऑफ द वायरस. सो लेट्स थिंक, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे हेल्थ पे क्या क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है, प्लैनेट के हेल्थ पे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. एंड आई रियली होप दैट many organizations get inspired by what PVR has done. And that's why we've come together to make this film. It is about letting people know that you need to be conscious about the planet, you need to be conscious about the environment, and you need to take steps towards a greener, happier future. So thank you so much, Sanjeev. Thank you so much, everybody at Team PVR. This is so inspiring and so needed. Aside sometimes now. So my question is, do you really think changing uniform can be a big step towards climate change? Plus, what is the cost production of these uniforms? I think we've highlighted
supported in the AB many initiatives, and changing uniforms is just one of them. Of course, we're looking at other initiatives as well that you had seen on the screen that Bhumi had articulated. But this is also one of them, because plastic waste is something which is a serious problem. PET bottles and plastic water bottles is something which is polluting the oceans, choking the oceans, affecting marine life, and that's something which we all know about. And if we can and are able to use all that plastic waste and recycle them into uniforms for our staff at the cinemas, it's a step in the right direction. And at the end of the day, cost and all the rest of it doesn't really matter, because the cost of climate change is a lot more serious. Thank you so much. Hi, I'm Kanak from KM हिंदी न्यूज़। मैं आपसे जानना चाहूँगी PVR की इस पहल से कितने लोग जो है जागरूक हो पाएंगे? मैम, आशा तो यही है कि बहुत सारे लोग होंगे। ये सबसे बड़ा चेन ऑफ सिनेमाज है हमारे कंट्री का, और आशा हम होप यही करते हैं कि जितने भी सिनेमा लवर्स यहाँ आए, जितने भी लोग आके हमारी फिल्में देखें, वो हमारी फिल्मों से तो प्रेरित हो ही, लेकिन साथ साथ हमने ये जो एवी बनाई है, हम इसके थ्रू जो मैसेज देना चाहते हैं उससे भी प्रेरित हो, क्योंकि हमने इस फिल्म में भी हमने कुछ हैवी ड्यूटी नहीं रखा है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक छोटे से लेके बुजुर्ग इंसान तक सब तक हमारा मैसेज पहुंचे, क्योंकि सब इस सोल्यूशन का हिस्सा है। हम किसी ये एक सर्टेन जनरेशन या एक सर्टेन एज ग्रुप या एक सर्टेन क्लास की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने बहुत ही सरलता से ये मैसेज देने की कोशिश की है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई रियली होप कि आप सब जो यहाँ हैं, आप सब भी हमें हमारी एवी आज देखकर, हमारी बातें आज सुनकर अपने अपने वे से छोटे छोटे कदम उठाए, ताकि छोटे छोटे कदम उठाए सस्टेनेबिलिटी के ओर। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स कर रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट जो है सुरक्षित रह सके? जी बिल्कुल। तो मेरे घर में जब मैंने शुरुआत की थी ना, तब बहुत ही भयंकर लड़ाइयाँ होती थी। बिकॉज क्या होता है ना, आदत होती है जब साफ सफाई चल रही होती है घर पे, लीटर पानी यूज कर रहे हैं, तो एक माइंडसेट चेंज करना होता है सबका। तो पहले मैंने शुरुआत अपने घर से ही की। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई एक्चुअली पुट वाज अ रिस्ट्रिक्टर, जो आपने अपने मेन सप्लाई पे लगा हुआ है। जो पहली चीज मैंने की थी, मैंने एक रिस्ट्रिक्टर लगाया था। नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट शुरू कर दिया था। तो हमारा जितना भी गीला कचरा होता है वो कंपोस्टिंग में जाता है, जो हमारे प्लांट्स में जाता है। एक सर्कुलर इकोनॉमी हमने हमारे घर पे शुरू की है। जो भी रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, जैसे कि कोशिश यही है कि हम कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे घर पे यूज करें। एक्चुअली मेरे घर पे मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि कम से कम 90% लेस कंजम्पशन होती है। अगर बाहर से कोई चीज़ आ गई, उसकी खैर वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट, बट हम कॉन्शियसली कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ खरीदते नहीं है। रीयूज करना चीज़ें, जैसे मैं शूट पे जाती हूँ बहुत, या हम इतना ट्रैवल करते हैं, बहुत आदत होती है कि डिस्पोजेबल कटलरी हो गई, या मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कटलरी, मेरी प्लेट्स, मेरी बोतलें, जो भी चीज़ें हो वो ऐसी हो जो मैं रीयूज कर पाऊँ, मेरे डब्बे। तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें अवेयर होना होता है। जो भी रिसाइक्लेबल चीज़ें हैं, सारी की सारी हम एक रिसाइकलिंग की फैक्ट्री में भेजते हैं। और मुझे लगता है आप सबको करना चाहिए। आप सोचिए कि पहले के ज़माने में ना कबाड़ी वाले होते थे जो आके हमारे घर का जंक उठाते थे। आज के ज़माने में भी वो हैं, करेक्ट, लेकिन अब वो प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं। तो प्लीज अपने घर के जो डब्बे आते हैं, जिनमें आपके खाने आते हैं, पीटी बॉटल, जितना भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, उसको कचरे में मत डालिए। बहुत मुश्किल होता है जब ये गार्बेज डंप पहुंचता है। अब एक हर एरिया में आजकल, हर बड़े शहर में, छोटे शहरों में भी लोग हैं जो प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं, उन तक ये चीजें पहुंचाई, वो आके आपके घर से ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी स्टेप्स है, लेकिन मोटा मोटा जो मैंने किया था वो यही था। And just to add, I think what you had already mentioned as well, that first of all, this is not expensive. Yes. This is something this is just a change of habit, a very small, simple change of habit, which unfortunately during the rising consumerism, we've all been spoiled.
And we need to go back to how our dadis and nannies used to do it, and they used to do it. That one dabba used to store everything for like decades. Usme dal, chawal, everything used to get, so we're, I think, the pioneers of recycling, but we've forgotten all about it over the decades because of our overconsumption. And secondly, as you said, the myth that it doesn't affect us. It is affecting us already. Delhi is going to be 46, 47 degrees Celsius in the summer. Climate is gone haywire. Bombay, you said, was warmer than usual. Europe is 40 degrees when you go there in summer. So it's a reality, and everyone has to face up to it. And I think in our way, with the industry and all of us getting together, if we can disseminate this information, I hope it goes a long way in creating that awareness. Hi Bhumi, Priyan from TV9 Bharat. Sorry, sir, I can't spot you. Hi. TV9 भारतवर्ष से मैं प्रियंक। शुभकामनाएं आपको बहुत पहले कि आप इस कमाल के इनिशिएटिव से जुड़ी। एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि मूवी स्टार्स को यूथ काफ़ी फॉलो करते हैं, जो वो इनिशिएटिव लेते हैं यूथ काफ़ी उनको फॉलो करता है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरह अपेक्षा करती हैं कि आने वाली बॉलीवुड मूवीज़ में ड्रेसिंग में किस तरह ये प्लास्टिक और कपड़ों का कुछ इस तरह सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाया जा सके, उसको प्रोत्साहित किया जाए। आपका व्यक्तिगत नजरिया इस पर। प्रियंका, आपके सवाल के लिए थैंक यू। आपने बहुत सही बात कही कि एज पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। वो मानते हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं आशा ही करती हूँ वो मानते भी हमारी बातों को, अगर हमारी बातें सही हो तो ना एक कॉन्सेप्ट होता है फैशन में कि मुझे बहुत बार पूछा जाता है क्या आप अपने कपड़े रिपीट करती हैं। मैं बोलती हूँ हाँ, मैं अपने कपड़े रिपीट करती हूँ, क्योंकि वो जमाना गया जब लोगों को लगता था कि ओ आई डोंट रिपीट माय क्लोथ्स एंड इट्स कूल। इट्स वेरी अनकूल, तो मुझे लगता है एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को आगे बढ़ के ये बातें करनी चाहिए, उनको पहले अपनी हैबिट्स बदलनी होगी। देखिए, फिल्मों में तो हम कोशिश यही करते हैं, स्पेशली आजकल जिस प्रकार का सिनेमा बन रहा है या जिस प्रकार के सिनेमा के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ या जैसी फिल्में मैं करती हूँ, कोशिश यही रहती है कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव चेंज ला पाए लोगों के माइंडसेट में। तो आपको किरदार भी वैसे ही दिखाने पड़ेंगे। आर देयर इनफ स्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड क्लाइमेट चेंज? नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज है कि अभी तक किसी ने इस पे फिल्म क्यों नहीं बनाई है। You're looking at me now. Where is fire? है ना? And you're right. I really hope ऐसे और किरदार लिखे जाए जहाँ पे एक कैरेक्टर का पैशन हो अपने प्लैनेट को बचाना, या उसकी प्रैक्टिसेस वैसी हो, वैसे ही आप एक बड़े ऑडियंस तक पहुँच पाएंगे। एंड आई रियली होप ऐसा हो। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल मैं, मेरे कलीग्स, हम सब कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके इसका प्रचार करें। Hi Bhumi, hi sir. I'm a professor and I teach management students, PGT and MBA students. I personally was very impressed with this whole launch event. One question which comes to my mind when we talk about upcycled products, what is the difference between recycled and upcycled? Because you said the uniforms were upcycled. Upcycled. Yeah. So is there a big difference between the terms? I mean, not really. I think the recycle is when the existing products are basically reused again. That's right. And there are so many examples of that happening as well, even in the garment industry. Like H&M and companies like that actually have an area now where you bring your own old clothes and you get a voucher against that. And what they do with those old clothes is probably just recycle them and use them again. And what we've done here in PVR with the uniforms is something which we're very fortunate to actually find people who could use plastic bottles, which actually do get consumed in thousands, and they just get thrown away. To the technology to be able to use those plastic bottles and make clothing and uniforms out of it was a wonderful technology, and I'm so glad that there are people out there in India, in startups,
who are actually focusing on businesses which focus on sustainability and impact investing. And there's so many people out there, young entrepreneurs, who are focusing on that. And we're very fortunate that we're in a position where we're able to harness their talent and harness the technology that they are coming out with. भूमि हिमांशु दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ बॉक्स काफ़ी दिनों से बड़े स्क्रीन पर आपको मिस कर रहे थे अभी लास्ट आपको OTT पे देखा था गोविंदा नाम मेरा और अब नेक्स्ट वीक शायद भीड़ आपकी आ रही है बहुत कमाल का सिनेमा होने वाला है किस तरीके का वो फिल्म होने वाली है कुछ अगर आप उसके बारे में शेयर करना हो जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है एज अ सिनेमा लवर अगर आपको बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखनी है तो आपने हमारी कास्ट देखी है बहुत रेयरली होता है कि इस प्रकार के इतने उम्दा एक्टर्स एक साथ आए और एक ऐसी इम्पोर्टेंट फिल्म के लिए तो वी रियली होप दैट द फिल्म इज लव्ड वाइडली इट इज सेट ड्यूरिंग अ टाइम दैट वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड कोविड काल हम सब ने देखा हम सब ने एक्सपीरियंस किया है एक बहुत ही ओवरवेलमिंग समय था हम सब के लिए तो उसी समय की है ये कहानी एंड या ओके सो भूमि Let's stick to the event. Request that. मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैम बहुत गर्व की बात होती है जब हमें ऑस्कर से मतलब नवाजा जाता है देश को और लास्टली अभी जो है अभी RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर से नॉमिनेट किया गया है तो कैसे देखती हैं आप किस तरीके से सर आप भी अगर आप कुछ कहना चाहें फॉर RRR और नाटू नाटू सॉन्ग सर नॉमिनेट किया आप तो जीत गए और सिर्फ नाटू नाटू नहीं थे एलिफेंट विस्परर्स भी जीते हैं और बहुत खुशी होती है जब आपके दोस्त ऑस्कर्स वापस घर लाते हैं आई फील एज अ लिटिल गर्ल जब बचपन से ही मुझे एक्टर बनना था और हर साल मैं सुबह उठ के ऑस्कर्स देखती थी और सोचती थी कि व्हाई कांट आई सी एनीबडी हु लुक्स लाइक अस ऑन द रेड कार्पेट so I would miss that representation but this year around that has completely changed and I really hope that this is the first of many I really hope that we have many films from the Indian film fraternity that go there that are celebrated because we churn out such fantastic cinema and finally it's reached a global stage so I want to congratulate everybody that won. सर I think I echo the same sentiment. Elephant Whisperer, made by a friend, Uneet. I'm so happy for her. And to go on the stage and win that award was just exhilarating for all of us who also I woke up at 5 in the morning. First I watched the red carpet and and then I watched which in this year was a champagne carpet. And then watched the Academy Awards and the same goes for Natu Natu, the way it was presented by Deepika, the way it was performed on stage, on an international stage, and ours is such a prolific, massive film industry, and to be getting this acknowledgement is a matter of pride for all of us.